Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. Welcome back to our physics lecture. Students, close your eyes for a moment and think about the different sounds around you. The ringing of your mobile phone, the voice of your friends, the sound of rain, the noise of traffic, or even your favorite song. All of these are sounds, but interestingly, every sound feels different from the other. Some sounds are loud, some are soft, some are sharp and high, while others are deep and heavy. In fact, we can even recognize the voices of our friends, teachers, or family members without seeing them. But, students, have you ever wondered what actually makes these sounds different from one another? Why does one sound appear loud while another sounds soft? Why are some voices high pitched while others are low? And how can we recognize different people just by listening to their voices? Well, students, today we are going to explore the answer to all these questions as we begin our topic characteristics of sound. In this lecture, we will learn how sounds can be distinguished on the basis of loudness, pitch, and quality, along with simple daily life examples that will make these concepts easy and interesting to understand. So, students, stay focused and try to connect every concept with the sounds you hear in your daily life because physics become much more interesting when we relate it to the world around us. Now let's start our topic. Dear students, before discussing the characteristic of sound, first of all, let us quickly understand what sound actually is. Students, sound is a form of energy that is produced due to vibrations and travel in the form of waves through a material medium. In simple words, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने अराउंड ईयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है और ईयर डिस्टर्बेंस साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है. जब भी ये वेव्स हमारे ईयर तक पहुंचती है तो हमें साउंड सुनाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्ट्राइक अ बेल, pluck a guitar string, or beat a drum, these objects start vibrating and produce sound. Students, one important point to remember is that sound cannot travel in vacuum because it needs a material medium like air, water, or solids for its transmission. Now, students, as we know that all sounds are not the same, some sounds are loud, some are soft, some are sharp, while some are deep. So, the properties that make one sound different from another are called the characteristics of sound. There are three main characteristics of sound, that is loudness, pitch, quality, or timbre. Now, let us discuss them one by one in detail. Students, now we will understand the first characteristic of sound, which is pitch. Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sounds. Now, what is shrill sound and what is grave sound? Shrill sound means thin sound. Shrill sound is produced when the frequency of a sound is high. For example, the sound of women, the sound of birds, the sound of cats, these all are shrill sounds. Next is grave sound. What is grave sound? Grave sound means thick sound. Grave sound is produced when the frequency of a sound is low. For example, the sound of men, the sound of dogs, sound of frogs. These all sounds are grave sound. So in simple words, पिच वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये पहचान सकते हैं कि साउंड थिन एंड शार्प है या डीप एंड हैवी है. Dear students, note down an important MCQs that pitch depend upon frequency of sound. Also, you should learn high pitch note and low pitch note. First, we will discuss high pitch note. Sounds having high frequency and small wavelength is called high pitch note. For example, the sound of
guitar. If we trace its sound wave, we observe that frequency is high and wavelength is small, जैसे कि आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है. Now, what is low pitch note? Sounds having low frequency and large wavelength is called low pitch note. For example, the sound of dole or drum. If we trace its sound wave, we observe that frequency is low and wavelength is large, जैसा कि आपको इस वेवफॉर्म में नजर आ रहा है. Therefore, we can say that high pitch note has a high frequency and small wavelength, and low pitch note has low frequency and large wavelength. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज लाउडनेस. Loudness is the characteristic of sound by which we can distinguish between a loud sound and a faint sounds. In simple words, loudness हमें बताता है कि कोई साउंड कितनी तेज़ या कितनी हल्की है, मतलब आवाज़ कितनी तेज़ है या कितनी धीमी है. फॉर एग्जाम्पल, अ लाउड स्पीकर प्रोड्यूस लाउड साउंड, whispering produce soft sound. Students, loudness mainly depend upon the amplitude of sound wave. Amplitude means the height of wave. अगर वेव ज़्यादा ऊपर तक गई हो, यानी वेव की हाइट ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जैसे कि आपको इस वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है. और अगर वेव कम हाइट तक गई हो तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड कम है, जैसे कि आपको इस वेवफॉर्म में नज़र आ रहा है. एक क्वाइटर साउंड है और एक लाउडर साउंड है. क्वाइटर साउंड का एम्पलीट्यूड कम है. एम्पलीट्यूड क्यों कम है? क्योंकि वेव ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई है, वेव की हाइट कम है. लेकिन जो लाउडर साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वेव की हाइट ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है कि ये साउंड लाउड है. Also, amplitude depend upon sound energy. Greater the sound energy, larger is the loudness, and vice versa. Dear students, note that amplitude is directly related to the energy of sound. Greater sound energy, greater will be the amplitude, and louder will be the sound. Similarly, lower sound energy means smaller amplitude, विच मीन्स सॉफ्टर साउंड. सिंपल वर्ड्स में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही लाउड आवाज़ होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो साउंड सॉफ्ट हो जाएगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स. Dear students, when you increase the volume of a mobile phone, the amplitude of sound wave increases and the sound becomes louder. Similarly, if you increase the volume of a loudspeaker, amplitude increases and sound becomes loud. But if you decrease the volume, amplitude decreases and sound becomes soft. Students, loudness is not only about amplitude, it also depends on some other factors. That is area of vibrating body, distance from the source of sound, and nature of material medium. First, we will discuss area of vibrating body. Dear students, loudness also depend on area of vibrating body. If the vibrating surface is large, it produces more air disturbance, so sound becomes louder. For example, a big drum produces louder sound than a small drum. Next is distance from the source of sound. If distance increases, if the distance between the source of sound and the listener increases, then loudness will be decreases. जितना हम सोर्स से दूर जाते हैं, साउंड उतनी ही स्लो होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ नियर बाई स्पीकर साउंड्स लाउड बट फार अवे इट बिकम्स वीक. द लास्ट वन इज nature of medium. Students, loudness also depend upon the material through which sounds travel. जैसे कि आपको पता है कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड की जो लाउडनेस है वो मीडियम पर डिपेंड करेगी, और डिफरेंट मीडियम में साउंड की जो लाउडनेस होगी वो डिफरेंट होगी. सबसे ज़्यादा साउंड की जो लाउडनेस होगी वो सॉलिड में होगी, देन उसके बाद लिक्विड में होगी, और जो सबसे कम लाउडनेस होगी, सबसे जो वीक साउंड होगा वो गैसेस में होगा. नाउ वी विल स्टडी द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज क्वालिटी ऑफ साउंड. क्वालिटी ऑफ साउंड इज आल्सो कॉल्ड टेम्बर.
Quality of sound is the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds that have the same loudness and the same pitch. आसान अल्फाज में क्वालिटी हमें बताती है कि अगर दो साउंड्स की लाउडनेस और पिच सेम हो तब भी हम उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर साउंड का अपना एक यूनिक नेचर होता है। अगर दो साउंड्स सेम लाउडनेस और सेम पिच के साथ प्रोड्यूस हो तब भी वो सेम नहीं लगती, दोनों की आवाज़ डिफरेंट होती है। इस डिफरेंस को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पियानो और गिटार सेम नोट प्ले करे सेम लाउडनेस और सेम पिच के साथ तब भी हम इजीली पहचान लेते हैं कि कौन सा साउंड पियानो का है और कौन सा गिटार का। यही डिफरेंस क्वालिटी की वजह से होती है और यही डिफरेंस कहलाती है क्वालिटी ऑफ साउंड। सिमिलरली हर इंसान की वॉइसेस डिफरेंट होती है, इसलिए हम बिना देखे भी अपने फ्रेंड, टीचर्स या फैमिली मेम्बर्स को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। That is due to the quality of sound. All right, students. Today we discussed the characteristic of sound. We learned that pitch help us distinguish between shrill and grave sound. Loudness tell us whether a sound is loud or faint, and quality help us recognize different sounds even if their pitch and loudness are the same. I hope this lecture helped you understand the concepts clearly. Thank you, students, for watching the lecture. Allah Hafiz.